access of consumers of even 10 kilowatt is liberalized by taking away the role of Transco and Discom. This is likely to impact the finances of Discom, leading to additional burden on domestic consumers, sir. I would like to know the response of the new government on all these critical issues, which are very important, which I have mentioned, and I hope that the government will come up with a reply on all the questions which I have raised, sir. Sir, at the same time, I would like to bring few important issues, sir, about old city of Hyderabad. We have been time and again requesting for 11 kV feeders and 11 kV, and we have also been requesting for more substations to be added on in old city. But it is so unfortunate that on our repeated requests, this demand has not been accepted, sir. And there are many sanctions which we have taken before, a year before. Like in my constituency, sir, I have taken a sanctions worth 12 crores, 12 crore के मंजूरियां हमने हासिल की थी चंद्रायन गुट्टे के लिए, जिसमें एडिशनल पोल्स भी थे, सबस्टेशंस भी थे, नए फीडर्स के लिए भी हमने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो वैसे ही पड़ा हुआ है. मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर भी गौर किया जाएगा. सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, छोटी बात है जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद छोटी बातें करते हुए बड़ी शर्म आती है, लेकिन अफसोस के करना पड़ता है कि पुराने शहर में हम से यूजी केबल, बंच केबल के लिए भी दरखास्त देते हैं तो वो केबल भी नहीं दिया जाता है. ट्रांसफार्मर एडिशनल होना है पुराने शहर में. पावर कट्स नहीं होंगे रियासत में, लेकिन पुराने शहर में बहुत मर्तबा पावर कट्स होते हैं, और पावर कट्स की वजह यही है कि ट्रांसफार्मर्स पर लोड ज्यादा है, और ट्रांसफार्मर्स की जो कैपेसिटी है 100 की है तो उसको बढ़ाना है, अगर 200 चेंज की है तो उसको बढ़ाना है. ये छोटे मोटे काम हुए नहीं, जिसकी वजह से. एंड वन मोर थिंग सर, एफओसीज है. एफओसी मतलब सेंटर्स होते हैं जो जाते हैं, अटेंड करते हैं. वी वर रिक्वेस्टिंग फॉर मोर एफओसीज टू बी एडेड ऑन इन ओल्ड सिटी, बट दैट आल्सो हैज नॉट बीन एड्रेस, सर. आई होप दैट दिस गवर्नमेंट वुड एड्रेस आवर प्रॉब्लम, सर. एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चंद्रायन गुट्टे में एक एरिया है जिसको सप्लाई सिटी से नहीं आती है, इसको सप्लाई आती है तो गगन पहाड़ से, महेश्वरम से या कांटेदन से आती है. तो हमने बार बार मुतालबा किया कि सिटी लिमिट्स में इसको लाइए, लेकिन उसको नहीं लाया गया. 180 स्क्वायर mm केबल के लिए भी हमने दरखास्त की, लेकिन नहीं हुआ. मैं आपके जरिए हुकूमत से एक मुतालबा करना चाहता हूं कि पुराने शहर में बहुत जगहों पे तार लटक रहे हैं, और लटकते हुए तारों को ऊंचा करने के लिए एक 500 पोल्स की जरूरत है पूरे पुराने शहर में. अगर आप मंजूरी देते हैं तो मैं आपका ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा. नए ट्रांसफार्मर्स होना है, और बहुत सारी जगहों पर 3 फेज नहीं है ओल्ड सिटी में. 3 फेज के लिए हम बोल रहे हैं, थर्ड फेज देना है. उम्मीद करते हैं कि आप उसको भी मंजूरी देंगे. बोलिए, प्लीज टेक द माइक, प्लीज गो अहेड. Please go ahead. Akbaruddin sir. For the last 10 years, he's the senior most legislator here, but he's telling that so many 500 polls he required. He never bothered to ask the previous government why he has done. He's giving the lecture so many times as if he's the master voice. Then why he has not asked all those? Yes. 10 years was given the time for them. He has not demanded anything for the old city. Please. Akbaruddin sir. Honorable Speaker sir, बच्चे बड़ों की बातों में मदाखलत नहीं करना चाहिए. अभी कितना भी बोलो बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है, सीखिएगा. असेंबली के रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिएगा. हम बार बार मुतालबा करते गए हैं. If you are going to give me the time, sir, I will mention on the 10 years achievements of Old City. For your kind information, in Old City, we were successful in getting sanctioned works worth 14,500 crores. And that information was laid on the table. And if you have to calculate the works which are sanctioned, is more than 25,000 crores. As far as this electricity is concerned, we were successful in getting a sanction of many electrical substations.
You mean to say कि I shouldn't say? आपको जरा अकल होनी चाहिए कि कोई वायर डालते हैं सर, like I want to give an example कि a wire is being given sir, Please. it takes sir every 5 years it is required to replace those wires. So I will have to, as a public representative, I'll have to make my demand. I'll have to put across. That doesn't mean that I'm going to be quiet. Sir, it is the government and the government is a continuous process. So I am going to make a demand, I am going to make a request, I am going to ask. You want to give or you don't want to give, it is your prerogative. But my responsibility is to demand, to make a request to the government. Government has the responsibility to take care of everybody. And I am making this demand on the assurance given by the Honorable Chief Minister that he is not going to take any पुराने शहर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे बोले आप, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आपके लेजिस्लेचर्स के साथ ऐसा दिखता है कि आप इंतकामी कार्रवाई करना चाह रहे हैं. सर, आई हैव टू रिप्लाई टू दिस सर. सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को तो हिंदुस्तान भर में इख्तिदार है और मौका है. 16 चीफ मिनिस्टर आए रियासत तेलंगाना में, 119 सीट हैं, हिंदुस्तान के 500 पार्लियामेंट के सीट्स हैं, रियासतें हैं, लेकिन उनका मकसद यही है कि मुसलमानों की एक पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसको खत्म कर दो. उनका मकसद है कि रियासत में जो रीजनल पार्टीज हैं उनको खत्म कर दें. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या बड़ा नुकसान होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से. अरे हम 7 सीट पर हैं, लेकिन आपको 7 भी बर्दाश्त नहीं. हम अकेले यहां खड़े होते हैं, यह भी बर्दाश्त नहीं. आपका ये इंटॉलरेंस जो है ना, ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों से आपको गुस्सा है. क्या मैं मुसलमान हूं तो क्या यहां खड़े होकर अपने मसाइल को पेश नहीं कर सकता हूं? क्या ये मेरा हक नहीं है? I request my learned friend अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, you know, हमारा जो एमएलए साहब बात करे, he was just asking, basically the demand is there. He was just telling about the inefficiency of the TRS government, which they didn't do. He was not criticizing the MIM and all. No. Ek minute. No. He didn't say fail. Mr. Gentleman, I would like to say I haven't failed. No. Akbar bhai. No. He was. No. Sir. अरे एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको साहब. स्पीकर सर, ओवैसी साहब, प्लीज. No, if any member diverts, sir, gets diverted, basically, you know, it's only all the emotional issues which comes into being. So our member was just asking and questioning the TRS government, which they didn't do it. This is his context and this is his objective. It would have it would have taken in a wrong way. And I would like to request Honorable Speaker to expunge your words what Akbaruddin Owaisi has said about the new member. About the new member, like akal ka kuch aisa. नहीं, ठीक है भाई. No, I'm not. We are not here. We are here on a positive note. Sir, what? Please. Sir, my point here is, you know, he has seen many assemblies. No, that's fine. You know, we take everything in a very positive way. खबरदार in Urdu बोले तो, कवर बोले तो न्यूज information. खबरदार is nothing which is unparliamentary. KTR garu, please. Sir, you know, whatever you please examine the record, sir. Please examine the records. Whatever is unparliamentary, you can expunge it, sir. Sir, I request the honorable member also, please. He is a new member. He is a new member of the assembly. No. नहीं किससे भी मैं सर डराना हमारा फर्ज बनता नहीं होता साहब. We are all the new members, sir. There are 51 new members in the assembly, sir. Please. Sir.